नमस्कार, मैं प्रतीक सिंह टाग, प्रिंसिपल गवर्नमेंट पॉलिटिकल कॉलेज जोधपुर, आपका स्वागत करता हूँ। टुडे वी गोइंग टू डिस्कस नोडल एनालिसिस, नोडल विश्लेषण विधि। ये किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट nodal voltage analysis. Nodal voltage analysis complement the previous mesh analysis in that it is equally powerful and based on the sum concept of matrix analysis. As its name implies, nodal voltage analysis uses the nodal equation of Kirchhoff's first law to find the voltage potential around the circuit. नोडल वोल्टेज एनालिसिस में अपन एक बहुत ही पावरफुल टूल है जिसका same concept as we are using in the mesh solution. इसमें किरचॉफ करंट लॉ को यूज में लेते हैं और राइट द इक्वेशन फॉर एवरी नोड. So by ending together all these nodal voltage, net result will be equal to 0. यानी कि किरचॉफ करंट लॉ कहता है कि किसी भी नोड पे आने वाली धारा इक्वल टू जाने वाली धारा. तो अगर n नोड है तो एक रेफरेंस नोड के कंसिडर करते हुए सारी इक्वेशन लिखेंगे अपन. लेट्स सी. At each node point, write down the Kirchhoff first equation, that is, the current entering the node are equal to the value of current leaving the node. So the expression each current in terms of voltage across the branch for n nodes will be used to the one of them is used as a reference node. तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी सर्किट में पहले अपन नोड आइडेंटिफाई करेंगे, देन प्रत्येक नोड पे अपन किरचॉफ करंट लॉ लगाएंगे और एक नोड को रेफरेंस नोड मानते हुए इक्वेशन लिखेंगे. फॉर एग्जांपल, नोडल एनालिसिस क्या है? समरी जो अपन करने जा रहे हैं. The basic procedure for solving the nodal analysis equation is as follows. Write down the current vector assuming current into a node are positive, that is n-1 matrix, n for independent nodes. Then write the admittance matrix of the network where y11 is the self-admittance of the node 1, y22 is the self-admittance of node 2, इसी तरह से y j k, ये r गलत टाइप हो गया, y j k is total admittance joining node j and k. Then for network with n independent nodes, y matrix will be n into n matrix and r y n will be positive. इसमें अपन को जितने भी सेल्फ एडमिटेंस हैं वो सारे पॉजिटिव आएंगे और बाकी जो म्यूचुअल है वो या तो नेगेटिव होंगे या जीरो होंगे. The voltage vector will be n into L and will be list n voltage to be found. तो admittance matrix into voltage matrix equal to current matrix. So write, for example, in this case given circuit अपन यहाँ देख रहे हैं कि तीन नोड 1, 2, 3 और 4 को अपन रेफरेंस नोड मानेंगे. तो फर्स्ट के लिए क्या इक्वेशन होगी? फर्स्ट ये 30, तो V3 minus V1 divided by 30. Then this voltage, so
V1 minus V2 डिवाइड बाई 5 और ये वोल्टेज सोर्स जुड़ा हुआ है तो V1 ऑटोमेटिकली 20 हो जाएगा। इसी तरह से नोड 2 पे I1 ये तो V2 माइनस V3 डिवाइड बाई 10, देन मान लीजिए V2 ये तो V2 माइनस V1 डिवाइड बाई 10, V2 डिवाइड बाई 10 दिस ब्रांच एंड दिस ब्रांच में हो जाएगा आपके V2 माइनस V1 डिवाइड बाई 5 और नेक्स्ट V3 इनमें कोई भी करंट सोर्स नहीं जुड़ा हुआ तो इसको 0 करें। नेक्स्ट फॉर वी नोड 3 दिस इज ये 1 2 3 4 तो सबसे पहले नोड सेलेक्ट किया, देन दिस वन V3 by 20, then this one V3 minus V2 divided by 10, then this one V3 minus V1 divided by 30, and this current is inside, so it is I4. Now using this parameter, every node we write the equation. For example, in this case V1 and V2, this plus this plus this, इसमें this plus this plus this, all are, we assume that ingoing, so I1 plus I2 plus I3 equal to 0. Let algebraic sum of the current at any node is equal to 0. Write the equation, solve and simplify. Nth node is positive, so I1 put value I2, we get the equation 1, and similarly for second and similarly for third. ये -4 की वजह करंट अंदर जा रही है तो I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 तो 4 एम्पीयर तक वो इधर आ गया। हाउ वी राइट डायरेक्टली इक्वेशन बाय यूजिंग इंस्पेक्शन मेथड। इसमें अपन क्या करते हैं कि किसी भी नोड तो वही सेलेक्ट करने का तरीका है, वन इज कंसिडर एज ए रेफरेंस नोड, कंस्ट्रक्ट द मैट्रिक्स मैनर एज इन दिस NT is as there. First we Y11 select. Y1, 1, Y2, 2 and Y3 they are the self-admittance, that is 1 by R of respective node, and that is all, these are always with positive sign. While Y12 equal to admittance between node 1 and 2, this is also equal to 2 and 1. This is always with negative sign. Similarly Y23 admittance between node 2 and 3, this is also equal to 3 and 2, this is always with negative sign. Similarly Y13 equal admittance between node 1 and 3, and it is also equal to 3 and 1, this is also with negative sign. Now look, this is the node 1, this is node 2, this is node 3, let us assume that voltage V1, V2 and V3. Now इसका सेल्फ एडमिटेंस क्या होगा, ये देखिए ये 1 ओम रेजिस्टेंस 3 ओम का जुड़ा हुआ 1 ओम का, तो इसका क्या हो गया 1 by 1 plus 1 by 3, that is equal to 4 by 3. देन यहाँ पे देखिए 2 पे, यहाँ पे 1 ओम, यहाँ पे 2 ओम, तो 1 by 1 plus 1 by 2 admittance is the secondary with negative sign. Sorry, node between V2 and V1, node फर्स्ट और सेकंड के बीच में 1 ओम माइनस, देन 1 और 3 के बीच में 3 ओम, तो 1 by 3. Similarly, that is equal to Y12 equal to Y21, same. Then self admittance, this is 1 and 2, 1 plus 1, 1 by 1 plus 1 by 2, 3/2. इसी तरह से इसका हो जाएगा 3 और
4, तो 1/3 plus 1/4 equal to 7/12. इस तरीके से अपन all एंट्री कर लेते हैं. These are our variables and this is constant. These are the currents entering the node is negative sign. So 2 में एंट्री करिए तो नेगेटिव, 1 में एंट्री करिए तो नेगेटिव, 3 में बाहर निकल रही है तो पॉजिटिव. Now let's solve these using Cramer's rule. For example, consider this circuit. A, B, C, D, 4 node possible, but not one only principal node. So one equation required to solve this problem. So VA minus VB equal to 10 for this VB. Then VB by 40. Then VB minus VC by 20 equal to VC equal to 20 volt. So our equation हो जाएगी VA minus VC by 10, VC minus VB by 20 और third current ये है VB. So in this way we put the value of VA already know, VC already know, then put the value in equation and get the result. Write the nodal equation for given circuit. In this circuit, first have 4 nodes, 1, 2, 3 and 4. Fourth one is as a reference. Let V1, V2, V3 are the nodal voltage. Now apply Kirchhoff voltage for every node. Write the admittance vector. So at node 1, 1 volt, self admittance is 1 and 3. So 1 plus 1/3, 4/3. Then between 1 and 2, minus 1. Then between 1 and 3, 1/3. Then this is also equal to 1, 2, 1 equal to 1, 2. That is self admittance. 2, 1 or 2, 1/2 and 1/1. Then 2 and 3, no impedance, 0. So in this way we are write the matrix. So now solve these 3 equations. Supernode. A branch in the circuit has only voltage source, then it is slightly different to apply nodal analysis. For that we constitute a supernode position. This technique, resistant node, those are connected by voltage source reduced to a single node, then apply KCL to as usual. यानी कि सुपर नोड में क्या करते हैं कि जिस सुपर नोड तो पहले बनता कैसे, 2 नोड के बीच में अगर कोई वोल्टेज सोर्स जुड़ा हुआ है आइडियल, तो वो सुपर नोड की कंडीशन होगी. उसमें अपन उसको हटा के दोनों नोड्स को मर्ज कर देंगे और एज इट इज राइट द KCL यूजिंग KCL नोडल इक्वेशन वोल्टेज इक्वेशन एज डिस्कस. ये देखिए V2 N2 और N3 के बीच में वोल्टेज सोर्स जुड़ा हुआ है, तो ये नोडल वोल्टेज हुआ, सुपर नोडल मेथड काम लेना पड़ेगा. तो इसमें फर्स्ट इक्वेशन था कि ये V1 2 और 1, तो V1 by 1/2, 1/2, then V1 minus V2 by 10, sorry 1 equal to 5. Similarly, then V2 minus V3 equal to
20 वोल्ट इसके कारण डायरेक्ट आ गए। ये इक्वेशन इसका एडवांटेज है कि एक इक्वेशन आपको सिंपली मिल गई। देन join this, remove this and consider as a merge V2 into N2 N3 में, not 2 को 3 में। Then write the equation, then V2 इक्वेशन लिखेंगे तो V2 minus V1 divided by 1, V2 divided by 2, then V3 ये 10 ओम का सोर्स जुड़ा हुआ तो V3 minus 10 divided by 3 and this is V3 by 2। सो इस नोट पर लिखेंगे तो क्या होगा, एक तो ये आ गया, एक ये आ गया, एक ये आ गया और एक ये आ गया। ये बिंदु यहाँ पे आ गया तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। सो इन दिस वे वी राइट द नोडल इक्वेशन फॉर सुपरनोड इन सुपरनोड कंडीशन। So this is the third equation. So now using these three equations we solve the example. Write the nodal equation and find out the nodal voltage for the given circuit. सीधी मैट्रिक्स एंट्री कीजिए। नोड 1, 2 दो नोड है, तीसरा रेफरेंस नोड कंसिडर करते हैं। तो 1 से जुड़ा हुआ है 25 3 एम्पियर, तो ये इधर आ जाएगा। एक जुड़ा हुआ है ये 50 पूरी 50 का ये आ गया। देन सेल्फ एडमिटेंस ऑफ नोड 1 तो देखिए 2 ओम 5 ओम 3 ओम तो 1/2 1/5 1/3। देन बिटवीन 1 and 2 1/3 माइनस के साथ। देन 2 and 1 1 माइनस के साथ 1/3। देन सेल्फ एडमिटेंस ऑफ लूप 2 that is 3 6 and 4 3 6 and 4 V1 V2 is a node voltage and this is incoming, so it is come negative and this is positive. So solve this for V1 and V2, find the voltage. V1 come out 68 volt and V2 equal to 35.77 volt. This is all about the nodal equation, how to write the nodal equation and get the nodal value of nodal voltage. Thank you very much for being with us. फिर मिलेंगे, बाय।